ઇન્ડિયન સ્ટોક એસોસિએશને 12મી મેના રોજ વારાણસીમાં મિશન બ્રેન એટેકની પહેલી શરૂઆત કરી છે, જેમાં ભારતમાં સ્ટોક અંગેની માહિતી ફેલાવવા માટે ઇચ વન ટીચ વનની પહેલ શરૂ કરી છે। એક સ્ટોક વ્યક્તિના જીવન પર વિનાશક અસર કરી શકે છે જો તેનું સમયસર વ્યવસ્થાપન કરવામાં ન આવે તો। ભારતીય સ્ટોક એસોસિએશને સ્ટોક અંગેની માહિતી ફેલાવવા માટે અમદાવાદ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં અમદાવાદ ચેપ્ટરને મીડિયાને ડોક્ટર નિર્મલ સૂર્યા, ડોક્ટર અરવિંદ શર્મા અને પદ્મશ્રી ડોક્ટર સુધીર શાહે સંબોધન કર્યું હતું। आपका सवाल ये है कि स्ट्रोक इन यंग क्यों हो रहा है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में दूसरी दुनिया के कंपेयर करते हुए स्ट्रोक जो है वो 10 साल पहले हो रहा है। तो अगर वेस्ट में स्ट्रोक 50 और 60 साल की उम्र में आ रहा है तो हिंदुस्तान में 40 से 50 साल की उम्र में स्ट्रोक हो रहा है। और हमारे यहाँ कई सारे पेशेंट हैं जो 40 के नीचे 30 साल में भी स्ट्रोक हो रहे हैं। तो स्ट्रोक का प्रिडोमिनेंटली क्या कारण है? इसका कारण दो हो सकता है। एक तो हार्ट में अगर इरेगुलर बीट हो या होल हो तो उसकी वजह से भी स्ट्रोक आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्मोकिंग, टोबैको, इरेगुलर फूड। जो आज हम सब लोग फास्ट फूड, सब लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड यहाँ पर खाना खाते हैं, फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल के ऊपर ध्यान नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं है लोगों की, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ओबेसिटी है। तो ये जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से और स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, इनकी वजह से स्ट्रोक की इंसिडेंस बढ़ रही है। सर, हमारा मिशन क्या है? ब्रेन मिशन जो हम कर रहे हैं, क्या है वो मिशन? मिशन ब्रेन अटैक जो है ये एक एंड टू एंड केयर फॉर पीपल विथ स्ट्रोक। एंड टू एंड केयर मतलब हम प्राइमरी प्रिवेंशन, पहला आर्म जो मैंने आपको बताया कि जो भी रिस्क फैक्टर है उसको रोके। मिडल आर्म जो है वो एक्यूट मैनेजमेंट, मतलब आपको सिम्टम्स जल्दी से मालूम करें। बी फास्ट ध्यान में रखें, बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई डिस्टर्बेंस, एफ फॉर फेस एसिमेट्री, ए फॉर आर्म वीकनेस, एस फॉर स्पीच डिस्टर्बेंस। तो ये अगर है तो टाइम इज ब्रेन, तुरंत स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में जाएं, सीटी स्कैन करें, ब्लड शुगर चेक करें, ब्लड प्रेशर चेक करें, और जो गोल्डन पीरियड है 4.5 घंटे उसके दौरान जो ब्लड ब्रस्ट करने का इंजेक्शन है वो लें, ताकि आपके ब्रेन में जो पैरालिसिस हो सकता है वो रिवर्स हो। और कुछ पेशेंट जो आईवी थ्रोम्बोलिसिस देने के बाद ठीक ना हो रहे हों तो उनको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के लिए उस हॉस्पिटल में जाएं जहाँ पर एक्सपर्ट अवेलेबल हो और वो ब्रेन के अंदर जाकर क्लॉट को निकाल सकें। और थर्ड आर्म जो है वो जो पेशेंट इंस्पाइट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी रह गया है, पैरालिसिस रह गया है, बोलने की तकलीफ रह गई है, हाथ कमजोर रह गया है, चलने में तकलीफ हो गई है, उन लोगों को प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाना है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है और नए जो टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू रिहेबिलिटेशन कर कर वापस नॉर्मल, नियर नॉर्मल होना है। तो ये मिशन ब्रेन अटैक का मतलब है एंड टू एंड केयर फॉर पीपल विथ स्ट्रोक। सर, भारत में देश में જે વાત તે પ્રમાણે આશરે 4700 જેટલા સ્ટ્રોક પર ડે આવે છે, એટલે પર યર 17 લાખ સ્ટ્રોક થાય છે। ગુજરાતમાં એક્ઝેક્ટ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી, પરંતુ અંદાજ પ્રમાણે આશરે 240 to 250 જેટલા 240 થી 250 સ્ટ્રોક પર ડે થાય છે। એટલે કે 1 કલાકમાં આશરે 10 સ્ટ્રોક, मीनिंग दर 6 मिनिटे एक स्ट्रोक थाय छे। एक थंब रूल एवो छे कि 33% स्ट्रोक छे ए परमानेंटली डिसेबल थई जाय छे, माने 10 થી 15% નું મૃત્યુ થાય છે। બાકીનામાંથી 33% એકદમ નોર્મલ જેવા થઈને કામે વળગી જાય છે, અને બાકીના 33% કોક જાતના ડેફિસિટ સાથે પણ કામ ચલાવે, અડધું પડધું, એટલે મોડરેટ ડેફિસિટ સાથે એમની જિંદગી ગુજારે। આ રીતના આંકડા છે। સર, બ્રેન સ્ટ્રોકના લીધે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી થઈ શકે છે? ના, ઓકે, સર, 2021 પછી આ બ્રેન સ્ટ્રોકના કિસ્સાઓ સૌથી વધારે વધી ગયા હોય એવું ક્યાંક રેશિયો સામે આવ્યો છે? 2021 મતલબ કોવિડના ગાળા પછીની વાત છે। હમણાં 2-3 વસ્તુઓ બની છે। યંગ ડેથ્સ જે થાય છે એમાં બધા બ્રેન સ્ટ્રોકના નથી, કેટલાક
મોટાભાગના હાર્ટ એટેકના છે ને કેટલાક બ્રેન સ્ટ્રોકના છે, કેટલાક બ્રેન હેમરેજના છે, પણ બધાને એક જ લાકડી આંકવામાં આવે છે એવું નથી. એટલે બધાનું જો પોસ્ટમોર્ટમ અથવા તો વ્યવસ્થિત ચેકિંગ થયું હોય તો આપણે ખાતરીથી કહી શકીએ કે આમાં કેટલું બ્રેનને લીધે છે, કેટલું હાર્ટને લીધે. હાર્ટમાં બે વસ્તુ છે, બધા હાર્ટ એટેક આવે છે એવું નથી. કેટલાકનો હાર્ટનો રિધમ ઇરેગ્યુલર થાય છે, એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, વેન્ટ્રિક્યુલર ટેકિકાર્ડિયા, વેન્ટ્રિક્યુલર ફિબ્રિલેશન, એમાં ઇરેગ્યુલર હાર્ટથી હાર્ટ બંધ થઈ જાય. એટલે આ એક વસ્તુ છે. પણ વાત સાચી છે કે ઇન્સિડન્સના અંદર સ્ટ્રોકના કારણોમાં અને હાર્ટ એટેકના કારણોમાં ઇન્ફેક્શનનો રોલ હમણાંથી બહુ જ પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એવો જ રોલ હમણાંનું પોલ્યુશન ખૂબ ચર્ચા, ગ્લોબલ પોલ્યુશન વધતું જાય છે. ઇન્ડિયાનું પણ અમુક સેક્ટરમાં પોલ્યુશન ખૂબ છે, એટલે એને લીધે પણ સ્ટ્રોકના માત્રા વધી છે. અને મેં જેમ કહ્યું એમ આપણી લાઈફસ્ટાઈલ રોજ ને રોજ વધારે ને વધારે બગડતી જાય છે. સ્મોકિંગ, આલ્કોહોલ અને નેસ્ટી ડ્રગનું સેવન પણ પહેલાં કદી નહોતું એટલું વધતું જાય. આપ જોજો ગવર્મેન્ટ રોજ કેટલા કન્સાઇનમેન્ટ કરોડો રૂપિયાના ડ્રગ્સના પકડે છે. રેમ્પન્ટ આલ્કોહોલિઝમ થયું, આ બધા જ ફેક્ટર ભેગા થાય એટલે. અને બીજી બાજુ અવેરનેસ, ડિટેક્શન, આવા બધા ડ્રાઈવ અમે છેલ્લા 20 વર્ષથી પબ્લિક એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ અને ફિઝિશિયન એજ્યુકેશન પ્રોગ્રામ કરતા હોય, એટલે બધી રીતે અવેરનેસ પણ ખૂબ વધી છે. અને આ નેશનલ લેવલે આખો એમનો જુવાળ શરૂ થયો, એટલે વધારે વધારે કિસ્સાઓ पकड़ा। से पूछा गया है, मैं सेक्रेटरी हूँ इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन का, मैं डॉक्टर अरविंद हूँ। जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में जो आंकड़े हैं, जो मिशन ब्रेन अटैक के बारे में हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर निर्मल सूर्या ने बताया कि वो बहुत ही ऐसे हैं कि जिनको देख के लगता है कि हमें अवेयरनेस बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप जो दवाई के बारे में पूछें, क्लॉट बस्टर ड्रग जो दी जाती है वो लेस देन 1% अक्रॉस इंडिया दे पाते हैं, जबकि इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, इतना सारा सब कुछ गवर्नमेंट उसको फ्री कर रही है, तो भी पेशेंट नहीं पहुंच पाते हैं। 2 दवाइयां आने के बावजूद भी पूरे देश में, जहाँ की 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं, केवल 27,000 थ्रोम्बोलिसिस होते हैं। और अगर आप स्ट्रोक देखें तो उस हिसाब से मिनिमम 25 लाख से ऊपर थ्रोम्बोलिसिस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, CT स्कैन नहीं है, कि हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, पर हम यही कहना चाहेंगे हमारे एसोसिएशन के थ्रू कि इसकी अवेयरनेस की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी के पक्ष को लेते हुए हमने इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन ने सारे अक्रॉस इंडिया प्राइमरी स्ट्रोक सेंटर, जहाँ गाँव में जैसे PHC होता है, जहाँ पे CT स्कैन है, हम ये प्रोग्राम स्टार्ट किया मिशन ब्रेन अटैक का, फिजिशियन को ट्रेन करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रोम्बोलिसिस गाँव में पहुँच सकें। नमस्कार, जय हिंद।